Welcome students, class 12th physics objective solution. Question bank released by MP board for the session 2021-2022. इसके लिए हम यूनिट 7 पर आते हैं जो है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये चैप्टर नंबर 11 आपका है और इसी नाम से जाना जाता है। टोटल वेटेज 4 है, इसमें से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। जो पहला है वो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ इस प्रकार का। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इट्स एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, so light energy will convert into electric energy. This is photoelectric effect. ठीक है, सेकंड देखते। The nature of radiation is dual nature of, है ना, in which light travel in the form of photons which associated with particle as well as wave. Okay, next देखते हैं। The demonstration of matter waves are possible by कौन से एक्सपेरिमेंट से? दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन बाय द नेम ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो डेविसन एंड जर्मर वर द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट द वेव नेचर ऑफ मैटर। अगला देखते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज मेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। ही वाज awarded Nobel Prize for that. So Albert Einstein. The rest mass of photon is the next question है। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, तो रेस्ट मास तो जीरो होता है। सो तो फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है। बस आपका पहला पोर्शन जो था जो कि फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट है। अब हम सेकंड पोर्शन पर आते हैं जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखते हैं उसका फर्स्ट। लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ विच? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम और फोटॉन? ऑब्वियसली इट इज फोटॉन, सो द राइट ऑप्शन इज डी। ओके, द एनर्जी ऑफ फोटॉन रिप्रेजेंटेड बाय, इन 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से क्या? So the energy of photon is E equals to h nu. So the right option is A. Okay, आगे देखते हैं। The wave associated with electron is, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एज अ डिफरेंट वेवलेंथ इन अ डेफिनाइट रीजन इन अ स्पेस। सो द राइट ऑप्शन इज डी। बस इसी के साथ आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो राउंड है वो भी फिनिश होता है। थर्ड राउंड में हम आते हैं। राइट द आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। ओके, देखते हैं। राइट द नेम ऑफ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन टू एग्जिट आउट एग्जैक्टली फ्रॉम द सरफेस। इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द एक्चुअली एनर्जी, सो वर्क फंक्शन है ना, डिनोटेड बाय वाई। इट्स अ वर्क फंक्शन। आपको आंसर में केवल वर्क फंक्शन देना है। राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 into 10 raised to the power minus 19 joule. This is the relation between electron volt and joule. Write de Broglie wavelength associated with photon. जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी और एच बाय m into VRC. C is the speed of light in vacuum. So de Broglie wavelength lambda इतनी होती है। नेक्स्ट है राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। द राइट
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बोथ आर सेम थिंग बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट. हियर न्यू is the frequency, nu naught is the threshold frequency. Okay, right. Next question देखते हैं. How does photocurrent affected on increasing an intensity of light? So photocurrent is directly proportional to intensity of light. Thus, on increasing an intensity of light, photocurrent will also increase. This is the answer. Okay. How does photocurrent affected on increasing the frequency of incident light? It is clear that intensity of light, sorry, photocurrent की जो वैल्यू होती है, it's independent with the frequency of incident light. So whenever we increase the frequency, then there is no effect on photocurrent. So the right option is this one. This is the answer. Next answer is how does kinetic energy of electron affected on increasing the frequency of incident light? Kinetic energy of an electron is directly proportional to frequency of light. Thus, kinetic energy will increase on increasing the intensity of light. Next one is question है what is photon? So इसका आंसर होगा photon is the bundle of energy. E equals to h nu is the energy associated with it. Here h is Planck constant and its value is 6.67 into 10 to the power minus 34 joule second. Next one is what is photoelectric cell? Photoelectric cell is a device which converts light energy into electric energy and based on photoelectric effect. Next question is 10th question. Write the value and dimension formula of Planck constant. The value of dimension Planck constant is 6.67 into 10 raised to power minus 34 and its dimension formula is ml square t minus 1. ओके बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी फिनिश होते हैं. इट्स ओके.